आजकल की जो मॉडर्न कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है कि वी आर लाइक लेट्स टॉक अबाउट इट, लाइक लेट्स ओपन द फ्लोर। क्या आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन दिस कलीगा इन ए सोसाइटी, इन एज ए नॉर्मल सोसाइटी? क्या प्रॉब्लम हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? Prabhu ji, too much indulgence in technology. Yes, too much indulgence in technology. Yes. What else? And why is that problem, Ruchita Mataji? Why is that a problem? You want to satisfy your senses more and more for more pleasure. Okay, Like, so we are trying to entertainment do. is something should keep Hmm. on going on in life. Okay, so we are trying to satisfy our senses, और we are not, उसमें हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्या? We are not even successful in it. We are trying our best using technology. Yes, good. Anything else? And, What else is the problem? and Prabhuji, we are trying to get some kind of validation from outside instead of looking inside. Very nice. So our problem is because we are looking for validation from outside instead of looking inside. What problem does it create? What is it? What is Swana Mataji? What is it creating? What do you think the problem is Stress creating? and anxiety. Yes, stress and anxiety, because हमारे पास जो हमारे expectations है, they are not realistic anymore. क्योंकि we are trying to satisfy every single person around us. Very good. So one of the things that आज की डेट में, which is one of the most important topic in all the counseling sessions, all the emotional health, mental health के लिए जहाँ पर हो रहा है, the most important thing that's happening right now is self-love. So they are talking about self-love, self-love, self-love. Now, let's start to unpack what is self-love. So what do you think is self-love? Anybody wants to say, like, just as a starting point, what is self-love? Yes, Pooja Mataji. Keeping in check our emotional, mental, and physical health I feel is self-love. Yes, that is part of self-love. Very nice, very nice. Anyone else? What is And self-love? accepting the way we are, the acceptance is necessary, and then start from there. Beautiful, very good, very good. So that's self-love. What else is self-love? What else is self-love? Being kind to yourself. Being kind to yourself is very good. Yes, that's good. Lalit Prabhu, Hare Krishna. Hare The Krishna, first Prabhu. male candidate in last 4 or 5 weeks. So thank you. All right. So what is self-love? Lalit Prabhu, what do you think is the and what is self-love according to you? Giving time to yourself for things that Yes. you like. Very good. That's really good. Well done. Anything else? Anything else? One more. Give me one more. What is self-love? May not be right or wrong, just your own understanding of self-love. To do things that you like To do games, things. Yes, playing. yes. Yep, yes, good. And Prabhuji, one more thing, like if we will be able to love ourselves, appreciate ourselves, then only we will be able to share it with others. So it's very important that we should understand what is our value and what is our real identity. That's how we will start loving us. So that's it. That is my understanding, Prabhuji. I don't have any idea about it, so I Very just good. guess. Mataji, Richa Mataji, you've said whatever you said is perfectly correct. So let's talk about self-love. Self-love, actually, there are understanding क्या होती है? There are two kind of selves. One is a spiritual self. कोई बता सकता है what is the spiritual self that we have? प्रभुजी नित्य दास भगवान Yeah, आत्मा जो Our हमारी है। Atma. हाँ, हमारी जो आत्मा है। Yes, very good. That is हमारी एक होगी आइडेंटिटी, क्या होगी? We are spiritual self. और दूसरा हमारा है वो है conditioned self. Now this is a different concept. ये सचिनंदन स्वामी महाराज हैं, उनका एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, उसका नाम क्या था? आई थिंक इट्स फ्रॉम माय हार्ट बिलवेड ऑफ द लॉर्ड, ऐसे करके एक आर्टिकल है।
उसमें उन्होंने सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एंगल से वो दे रखा है अंडरस्टैंडिंग। उसमें वो बताते हैं कि पहली जो हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ होती है वो हमारी आत्मा है ना। और ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भरी पड़ी है। किससे? क्योंकि भगवत गीता के जो 5 सब्जेक्ट मैटर हैं उसमें पहला क्या है? आत्मा, मतलब सोल, ठीक है, परमात्मा, फिर कर्म और काल, और 5वां क्या है? जीव। प्रकृति, जीवा। जीवा है ना। जीवा नहीं, जीवा तो आत्मा हो गया। जीवा, भगवान, प्रकृति, प्रकृति, नेचर, नेचर, ठीक है, मटेरियल नेचर। तो ये जो 5 होती है उसमें से जो पहली है जिसको जीव कहते हैं वो है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, वो है सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ। लेकिन उसके साथ एक होती है, उसको कहते हैं कंडीशन सेल्फ। कंडीशन सेल्फ क्या होता है? हमारी जो ग्रॉस बॉडी होती है। किसी को पता है ग्रॉस बॉडी किससे किससे मिलकर बनती है? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रॉस बॉडी? 5 भूत। हाँ नहीं, हाँ यस नहीं, वो तो सिर्फ हमारे शरीर है, पंचभूत से बना है, बट जो हमारी With ग्रॉस mind, बॉडी, body, हाँ, mind, body and ego. माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है, ये होती है हमारी सटल बॉडी। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनड सेल्फ। नाउ हमारी ट्रू आइडेंटिटी तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पूरा भक्ति वृक्षा में करा है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। दैट इज हमारा ट्रू आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी ऑफ ए सेल्फ, लाइक हमारी जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, विच इज आवर रियल आइडेंटिटी। लेकिन एक और हमारी आइडेंटिटी है, वो है कंडीशनड आइडेंटिटी, जो हमारी माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बनी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है सेल्फ लव में? प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेयर वी, जो लोग सिर्फ सेल्फ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे चिड़िया है, चिड़िया जो है हमारी आत्मा है, और उसका जो पिंजरा है ये बॉडी है, ठीक है। हम इस बॉडी को बहुत देखभाल कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर सोल। तो सोल बेचारी भूखी मर जाएगी, ठीक है, जैसे चिड़िया भूखी मर जाएगी, हम लोग पिंजरा चमकाते रह जाएंगे। वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन एक स्टेप इसको आगे लेके जाते हैं, एक नॉच आगे लेके जाते हैं। आप सोचो कि जो जीव है वो है इंसान, ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, और जो हमारी जो ये कंडीशन सेल्फ है, ये क्या है? गाड़ी है, कार है, एक्चुअल कार, विच इज ए मटीरियल थिंग। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार ये सारा मटीरियल है, इसमें कुछ स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है। सो आप सोचो, अगर आपकी कार है, ड्राइवर का हमें ध्यान रखना है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम कार का ध्यान रखना भूल जाएंगे, इफ यू फॉरगॉट टू पुट द फ्यूल इन द कार, सर्विसिंग नहीं कराएगी, तो हम लोग कहाँ तक, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। हमारी जो ड्राइवर है वो अपने ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। सो हमारा सोल है, उसका एक पर्पस है ना, सो दैट वी कैन सर्व द लॉर्ड अल्टीमेटली। लेकिन अगर हमें सर्विस करनी है तो हमें उसके लिए एक बॉडी चाहिए, और हमारी जो बॉडी किससे बनी है? मन, बुद्धि, अहंकार और ये 5 महाभूत जो ललित प्रभु बोल रहे थे, इनसे बनी है। So the self-love comes when we understand and differentiate between our spiritual self and our material self, but we look after both. We are not looking after self. ठीक है? Now the first concept we're going to talk about is we have to take care of both, है ना? Self-love is important and we have to honor our spiritual self as well as our conditioned self. ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ वी हैव टू ऑनर। ऑनर का मतलब ऑब्वियसली हमें पता है, आत्मा को तो हमें ऑनर करना ही है, तो हम कंडीशन लाइफ को क्यों ऑनर कर रहे हैं? क्या ऑनर करें उसमें? तो हमें क्या ऑनर करना है उसमें? हमारी जो कंडीशन सेल्फ है, विच इज मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें क्या होता है? हमारे सारे इमोशंस छिपे हुए हैं, है ना। इमोशंस जो है सारे के सारे इसमें छिपे हुए हैं, अपने मन में, बुद्धि में, अहंकार में, है ना, इसमें इमोशन छुपे हुए हैं। सो वी हैव टू ऑनर दोज इमोशंस एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव, ठीक है। नाउ वी कैन कीप, इसका जो ग्रेन है, जो ये जो सेल्फ लव है, ये बहुत ज्यादा अभी थोड़ा सा हम, और पूरा बाय द टाइम वी गेट टू 8 o'clock वी विल बी वेरी डीप इनटू व्हाट सेल्फ लव मींस। ये एक छोटा सा ऊपर का एक लेयर हम लोगों ने डिस्कस करा है, ठीक है। नाउ अगर हमें भक्ति में भी एडवांस करना है, अगर हमें भक्ति में एडवांस करना है, तो हमें, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, व्हाट वी आर बेसिकली आस्किंग इज, राधा रानी प्लीज प्लीज प्लीज, राधा रानी एंगेज मी इन सर्विस ऑफ कृष्णा, ठीक है। आप बोल रहे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नेक्स्ट टाइम आपके पास फोन आता है कि यार चलो टेंपल में कुकिंग के लिए एक शेफ कम पड़ रहा है, आप आ सकते हो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरी चैंटिंग नहीं हुई है। नो, यू आर आस्किंग राधा रानी टू गिव यू सर्विस एंड यू आर सेइंग नो। So why you are asking? मतलब that means you don't understand the concept of bhakti. Bhakti का मतलब होता है सर्विंग। Now
अगर आपको टेम्पल जाना है, सो यू नीड टू हैव दिस बॉडी. अगर आपके पास बॉडी नहीं होगी, हाउ वुड यू कुक, हाउ वुड यू ड्राइव, हाउ वुड यू कुक? अगर आपका पाँव टूटा है, लंग्स खराब हैं, आप बेड से नहीं उठ पा रहे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, हमारी जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए नेसेसरी हैं भक्ति करने के लिए भी, है ना. नाउ भगवत प्रभु गीता जी, में, यस सॉरी प्रभु जी, मुझे तो थोड़ा सॉरी फॉर लेट में हो गया, लेकिन आपने जो बोला ना कि हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो हम बोलते हैं भगवान को सेवा, हमें सेवा करने का मौका दो. तो मैं कल का इंसिडेंट बता रहा हूँ. मैं टेम्पल गया, मेरी सेवा होती है, तो मैं गया ना टेम्पल में, किचन में वेजेस कट करने के लिए. तो सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था, सब लोग सुबह आके करके गए थे, वैसे का वैसा ही छोड़ के चले गए थे. तो मैं एक दूसरे प्रभु जी को कंप्लेन कर रहा था, प्रभु जी हमें कुछ करना चाहिए, ये सही नहीं है, सब लोग आके ऐसे ही छोड़ के चले जाए सेवा करने के लिए. तो तब जाके एक और प्रभु जी आए, वो एजेड थे काफी, मुझे उनका नाम नहीं पता है. वो बोलते, प्रभु जी आप हरे कृष्णा महामंत्र करते हो? मैंने बोला हाँ करता हूँ ना. तो बोले तो फिर क्या मांगते क्या हो? हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है? कि आप बोलते हो कि सेवा सेवा दो और भी आपको सेवा मिले, तो आप ऐसे एक्सक्यूज निकाल रहे हो. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. तो सो दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हमारी जो भक्ति है ना, हम भक्ति गुडी गुडी नहीं होनी चाहिए. भक्ति यार हवा में नहीं है. इट्स नॉट जस्ट, भक्ति इज नॉट इमोशनल, भक्ति इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल. देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल. एवरीथिंग एल्स इज इम्प्रैक्टिकल, बट भक्ति इज वेरी प्रैक्टिकल. प्रॉब्लम क्या होती है, जो कई बार हम लोग जब भक्ति में नए नए होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग भक्ति को ऐसा बना देते हैं, एक बहुत बड़ा हवा बना देते हैं. वी थिंक भक्ति, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो आई एम बेटर देन अदर्स जो भक्ति नहीं कर रहे हैं. तो ये जो ईगो घुस घुस के आ जाती है, तो हमारी भक्ति में वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है. भक्ति का एक्चुअली मतलब ये है कि वी वॉन्ट टू सर्व, है ना. जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास. हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है दास ही है. ठीक है. भगवत गीता में कहते हैं 3.30 में, जो ट्रू योगी होता है ना, ट्रू योगी by his own experience can understand the equality of all living beings regardless of their happiness or distress. ये है आई थिंक 3.30 है कि 31 है, ये बोल रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं. अब ये क्या बोल रहे हैं कि वी नीड टू बाय हिज ओन एक्सपीरियंस. यार अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट योर ओन थिंग, आप क्या हो, आपकी इमोशंस कैसे हैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड, आप उस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो, देन यू कैन नॉट बी अ ट्रू योगी, है ना. एंड दिस गाइज इज द स्टार्टिंग पॉइंट. 3.30 से कृष्णा स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ सेल्फ लव. श्रीमद् भागवतम भी पटा पड़ा है सेल्फ लव के उससे, है ना. विल कीप टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ we need to understand our own emotions. We need to understand हमारी क्या क्या problems हैं, है ना. And what are the difficulties? Until we understand this, we won't understand others. Does it make sense? अगर हमें खुद के बारे में नहीं पता है, तब हमें अपनी खुद की प्रॉब्लम्स नहीं पता है, इमोशंस नहीं पता है, वी हैव नो रियलाइजेशन अबाउट आवरसेल्व्स, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स. कहते हैं कि एक प्रभु जी बोल रहे थे, अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे कि मेरे को नहीं पता था कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मेरे में जो कमियां हैं, दैट विल हेल्प मी बिकम ए बेटर डिवोटी. उनकी क्या कमी है? ही हैज जीरो अटेंशन टू डिटेल. अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं उनकी अटेंशन टू डिटेल कम है, तो कई बार भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हैं, काफी चीजें भूल जाते हैं वो. नाउ बिकॉज वो काफी चीजें भूल जाते हैं, तो अब जो उनके पास डिवोटीज आते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया. तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार, ये तो होता रहता है, मैं भी भूल जाता हूँ, है ना. तो ये जो कनेक्शन वाली बात आ गई उनमें. ये क्या कनेक्शन हुआ? आई हैव ए मिस्टेक, आई हैव ए प्रॉब्लम, यू हैव ए प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. सो इट्स नॉट, it's empathy. It's empathy means that I actually do have an idea. अगर मैं, if I can try and be in your shoes and I can have a little bit of idea. So that is an understanding of ourselves. So self love में जो सबसे important चीज है वो क्या है? We need to understand ourselves. ठीक है. अभी जैसे ललित प्रभु ने बड़ा अच्छा बोला कि self love means spend time for yourself, do things that you like. Brilliant. However, if we
we should do things that we like, but we need to understand that things that we are doing, what kind of impact it is having with on others as well. You know, suppose I like to do, suppose there are 16 17 years old जो kids होते हैं, they have very strong hormones, है ना. अब वो बंदा सड़क पे खड़ा है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल गई, he wants to kiss that girl. Should he do it? No. Is that self-love? No, that's not self-love. Self-love actually means we need to understand what ticks me. मेरे लिए क्या, what makes me happy. Whether I do it or not, that's a different scenario. That's first जो step होता है self-love का, which is to discover who you are. है ना. Question आता है, sometimes we can't love ourselves because we have made so many mistakes. How do you deal with this? ठीक है. So these are the questions that जो मैंने बनाए हैं ताकि I can inspire you to ask those questions as well. So sometimes we cannot love ourselves क्योंकि हमें पता है यार हम मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, you know. So अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, so that's not self love. ठीक है. अब नाउ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्योर डिवोटी बनना चाहते हैं, क्योंकि प्योर डिवोटी जो होते हैं, वो जो सच में प्योर डिवोटीज हैं, दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एज दास 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 अनुदास, लोअर देन द लोएस्ट ऑफ द क्रीचर्स, से भी छोटा समझते हैं अपने आप को. बट दैट इज अ वेरी हाईएस्ट स्टेज ऑफ the self-love that we are talking about, is a very practical self-love that we need to understand now in order for us to become a pure devotee. ठीक है. उसमें क्या है कि प्योर डिवोटी जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने आप को जूते नहीं मारते हैं कि यार गलती हो गई तो ये बंदूक उठाए. That's not what pure devotee do. What pure devotee do is he understands, picks up, dusts himself up and say, look, you know, I'm going to try my best again. I made a mistake. I understand it was a mistake. I'm going to try my best again. They understand one thing. सबसे important definition of humility है, I am work in progress. If अगर हर किसी को ये बात clearly पता चल जाए, I am work in progress, तो कोई भी अपने husband को कोई wife डांटेगी नहीं, और कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डांटेगा नहीं, बिकॉज वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ क्या होती है कि मेरे को सुबह उठना मेरे लिए ना जल्दी नहीं उठ पाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार दिस इज अगेंस्ट एवरी ग्रेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस. यार सुबह 4 बजे मत उठो, कम से कम 5, 5:30, 6 बजे तो उठ जाओ, है ना. मेरे दिमाग में आता है. तो दिस पार्ट ऑफ मी इज एन ईगो दैट इज टेलिंग मी टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड मी. I need to control. So ये जो controlling जो tendency होती है ना हमारी, I need to understand that I have that controlling tendency. I want to control everything. जब सारी चीजें control में होती हैं, I feel at peace. But life is not like that. You cannot control other people. I can't control my wife. She's a different person. All I can control is whatever is in purview of this body, mind and intelligence. I can control this. And sometimes even that I can't control, you know, depending on किस mode में हूँ मैं. लेकिन controlling other person like my wife, absolutely stupidity. I cannot control my wife because I am not my wife. If I want to control my wife, then I'm a narcissist. ठीक है. Simple सी बात. क्यों? I don't have to control my wife. My wife is an individual person. I can tell her, look, you not getting up in the morning has a little bit of impact on me, or a lot of impact on me, and this is how I feel if you don't wake up in the morning. Now, what she does with that information, can I control it? No. Should I judge on it? No, because that's my life partner. She has some issues. I have more issues. है ना. अगर वो मेरे issues के साथ she is coping up with, why can't I cope up with her that issue? है ना. Self-love means you need to understand that I am work in progress, my wife is work in progress, and my kids are work in progress. My son is work in progress. है ना. सबसे गलत चीज जो हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, we tell our kids, hey, तू क्यों नहीं कर पा रहा है, तेरे को पता है वो बाजू वाला he can do everything like this. When we compare our kids start, क्योंकि kids में क्या होता है, they don't have comparison. बच्चों में कभी comparison नहीं होता है. हम लोगों ने, बड़े लोगों ने comparison में घुसा रखा है. We tell them because of the certain stuff that you do, you become better than others. That the comparison हमें उसमें डाल देते हैं, that becomes the most, जो उनकी ego trip बनने वाली ना, उसमें हम लोग घी डाल रहे हैं. So
Self love means we understand I am work in progress. मेरा बेटे में अगर कोई, if my son is not good in math, so तो क्या? If my son is not good in physics, so what? Who cares? I mean, we need to have discipline, but if someone is not good at something, it's not, we cannot control that. We can support it कि भाई ठीक है मैथ से कमजोर है, we can organize a tutor. लेकिन उसको थप्पड़ मार के बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं तू कितना बड़ा बेवकूफ है, उसको रीट्रेट कर रहे हैं, then that shows that we don't have self love. Self love का मतलब क्या होता है? We are content with who we are. We are okay with who we are. We are okay to understand that I am work in progress. मैं हूं work in progress. I am working towards it. Now यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है जो पूरी कहानी पलट देता है. वो क्या होता है? एक तरफ तो ये हो गया, एक बंदा हो गया अपने आप को मारता रहता है, आई एम सच ए बैड पर्सन. एक तो ये हो गया जो उसको लगता है वो सेल्फ लव नहीं है, वो सेल्फ हेट्रेड है. और दूसरी एक्सट्रीम में एक बंदा आता है, वो कहता है हम तो ऐसे ही हैं जी, टेक इट और लीव इट. That is rubbish as well. When you accept who you are, that doesn't mean you're okay with who you are. Okay मतलब you want to remain who you are. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Self love means to understand who you are, to understand your follies, and to understand what are the good things in you, and to understand कि मेरी जो follies हैं उसको मैं कैसे change कर सकता हूँ. And be in control of that mindset. Being in control of that mindset is self love. और ये दो एक्सट्रीम मैंने बात करा, दोनों ही खराब हैं. बीच का जो होता है उसमें क्या होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे में व्हाट डू आई लाइक, व्हाट मेक्स मी टिक, व्हाट इज इट दैट मेक्स मी हैप्पी. आई नीड टू गेट इनटू, फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है, आई नीड टू ड्रॉ. मेरे को स्केचिंग का शौक है, ठीक है, स्केचिंग, पेंट शौक है मेरे को. नाउ इफ माई सेल्फ लव मीन्स हाउ मच टाइम एम आई गिविंग माई सेल्फ टू डू दैट स्केचिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग. How much time? That is part of my self love. ठीक है. Now if I need that time and if I don't care about my wife, then it is not self love. Self love is I need like probably 1 hour a fortnight. I need to paint. I need that 1 hour so I can talk to Roxy. Roxy, look, every fortnight on a Sunday I need this from 10 a.m. to 11 a.m. when you are, instead of going to church, I'm going to do painting. ठीक है. Because this is what I want to do to improve my mental well-being so that I can be more present with you when I'm with you. Because when I do my painting, I become generally naturally happy from inside. All my anxieties go away and all my stress goes away. So this way, when if I invest that 1 hour in this, I can actually become much more better husband for the rest of the fortnight. If I present this case to her, what do you guys think she will say? She'll say, yeah, that's fine. You know, क्योंकि उसका return बहुत ज़्यादा है. Now we have to understand our partners have those things as well. There are things that our partners want to do for their self-love so that they can become a better partners. They can become better parent. They can become a better neighbor. They can become a better sister, daughter, you know, auntie. All of these things if we want to be better, we need to have a proper understanding of that self-love. Okay. Now, next question that comes is like एक चीज तो important है हम लोगों को, mistakes are inevitable. हम लोग सब mistakes करते हैं. How do you deal with those mistakes tells you whether you are on which extreme. अगर आपसे mistake हो रही है, you say, hey, this is me, मैं ऐसा ही हूँ, मैं करूँगा और mistake. That means you are egotistical. ठीक है, ईगो. दूसरी तरफ, oh my goodness, मेरे मिस्टेक हो गए, please beat me up, I don't know, I can't get out of bed anymore, I made that mistake. That's on the other extreme. The person will self-love, will think, okay, I made a mistake, this is something that I need to work on, but I have a lot of good qualities in me. And if I'm not good at this thing, that's okay. I can work on it slowly. I don't have to be perfect because I'm not looking for perfection. I'm looking for growth. This is called self-love. Now, how do we, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, how do you combine, how do you understand humility and self-love? So I'm going to ask you guys. So what is the connection between being humble
and having self-love? Anybody wants to just give an idea? Humility and They both self-love. they both complement. It's not like, they both are exhaustive. They're part of Let's say, together. The moment you are out of either of the two, you will either be not humble, yeah, or for that matter, you won't be loving. I won't say self-love, but yeah, you won't be in that, the aura of love, essentially. that's correct. That's correct. Or, for example, the people who are not who think they are humble. Some people think they are humble. Some people think, oh my goodness, I know how bad I am, and they think that they're being humble. But sometimes it is low self-esteem. Does it make sense? We have to be Agreed. we have to be very careful in this low self-esteem and humility. Absolutely. They're different things. They're opposite, actually. Low self-esteem is a negative emotion. Humility an excessively positive emotion. Humility means I know I stuffed up, but I know that I am not perfect, and I will work on this, and I want to make sure that I have a growth mindset. That is humility. Low self-esteem is, oh my Lord, I'm like this. My mother was right. My friends were right. My sister was right. And my wife is right. I'm good for nothing. That's not humility. So that's why, especially bhakti mein aane ke baad, we get so confused in this, because all we hear is, हमारे सारे आचार्य बोलते हैं they're lower than the stool, worm in a stool, है ना? They are coming from a very extremely high humility. हम लोग उसको compare ही नहीं कर सकते. So we should not compare ourselves with pure devotees. We have to be practical. So we have to understand, हम जब ये बात करते हैं ना, यार मैं तो बहुत ही गिरा हुआ हूँ, we are talking from low self-esteem. We are not talking from humility. Humility means, hey, you know what? यार ये मेरे को नहीं आता है. I can't do this. But I know if it's important, I'm gonna make an effort till the end of my life to get better. I can't be best at it. I will never be perfect at it, but I'll make sure that I don't go worse than this. I'm going to continue slowly, 2% increase. ऐसा करके. So we need to accept our good qualities as well. Now, low self-esteem से अगर हमें बाहर आना है, because I have a big personality of me had this concept of low self-esteem. And I still think that I have that, because I'm the youngest in the family. And मेरी family में, all my brothers and sisters, they are like academics. Like, I never came number one, first rank in my class, and none of my brothers and sisters were second ever. ठीक है? I was the only one. मैं second या third ही आता था class में, कभी first नहीं आया. But मेरे brothers वगैरह, they were all number one in the class. So I was a black sheep of the house. है ना? So I grew up thinking I'm not good enough. So what I did was, I realized that, you know what, I cannot be academically as strong as my brothers and sisters. So what I need to do is, I need to be charismatic. So I need to be funny. I need to make sure जहाँ भी मैं जाऊँ, people started glowing. आप मेरे घर वालों को पूछा, I'm the comedian in the family. I'm actually not a comedian. I had to put that persona on me because it was because of the low self-esteem, which was, I'm not good enough. But if you look at from a point of view, जो हर साल fail हो रहा है एक subject में, he looks at me, he goes, oh my goodness, Brijesh, every year you're second or third in the class. You're so good. But in my head, I was not. So that's called low self-esteem. If I had self-love, I would have thought, that's okay. My brothers and my sister, they have their own strength. I have my own strength, and I should not compare myself. I need to improve, but I don't need to get attached to that result so much that I'll lose my mental well-being. So that is the difference. So first step of humility is to accept where we are. A lot of people have problems. They will not accept where they are. और उनको क्या लगेगा, they will blame everyone else. तेरे को पता है, मेरी लाइफ में मैं कुछ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बीवी है ना, ये ना इसने मुझे ना घसीट लिया नीचे, वरना मैं कहाँ का कहाँ होता. Same with wives telling about husband. Because of my husband, I am where I am. Otherwise, I would have reached the sky, reached the stars.
That happens because of lack of self-love, because we don't understand who we are and we try and point fingers, because we don't look at the good qualities we have, we look at the failures that we have and we define ourselves with that. That is called lack of self-love, है ना. और दूसरी चीज क्या होती है, अगर हमें सेल्फ लव के बारे में पता नहीं चलेगा, then we have this controlling mentality that everything that I want needs to be fulfilled, है ना. आपको पता है जो मैक्सिमम क्राइम रेट है पूरे वर्ल्ड में, जो क्राइम रेट है उसका सिर्फ एक ही रीजन है. ऑल दिस साइकोलॉजिकल जो आर्टिकल्स हैं, इफ यू लुक एट इट, द मेन reason why people commit crime is because they want to control a certain aspect of someone or something. And that happens because they want everything they desire needs to be fulfilled, because they want to control that. So that's not self-love. Self-love का मतलब क्या होता है? I have desires, I know my desires, and there is a need for my desires to be fulfilled, but that's not the whole and sole purpose of my life. My life purpose is not to fulfill my desires. My life purpose is to serve. In order for me to serve, there are some needs and desires that I have. If I fulfill those needs and desires, I will be at a better state of mind so that I can handle other stuff, so that I can contribute better. That is called self-love. It's not कि मेरे को जो चाहिए मुझे मिलना चाहिए. कई husbands बोलते हैं, hey, you are my wife, you do what I say. I mean, who are you, man? Who do you think you are? I mean, why a wife need to listen to their husband? They are human being. The only difference is their gender. There is only gender difference. There's no other difference. You know, in Kaliyug mein, actually women are better equipped for Kaliyuga than men. है ना. हम men species are weaker than तो कई बार जैसे अर्जुन सेवा प्रभु उस दिन बता रहे थे, कहते हैं ना, people think that women think, oh, we want equality with men. It is so stupid, because women, you are higher up, very high above than men. Why do you want equality? Why do you want to come down to men level? You know, stay there. You are not equal to, you know, you don't want to be equal to men. Men are actually right now in this scenario in Kali Yuga, we have more defaults, we have more faults than women in general, because it is very hard for us to control our desires, and women can control their desires, and that's why we push a lot of issues on them. Hey, बच्चे कौन देखेगा? बीवी देखेगी. सामान कौन लाएगा? बीवी लाएगी. और घर कौन संभालेगा? बीवी संभालेगी, है ना. और आजकल काम भी कौन करेगा? बीवी करेगी. हर चीज बीवी करेगी, है ना. और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑर्डर देंगे, है ना. That's not, we should not have that kind of a mentality, because that's not self-love. It's coming from exploitative mentality. We want to exploit. हमारे अंदर है, we want to exploit someone, and the easiest person that we can exploit is either our husband, our wife, or our kids, and we take all of that on them. We don't, हमारे में कोई self love नहीं बचता है, और हम लोग उनका भी self love ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना. So the risk is that we start, अब एक रिस्क है इसमें. अब मैं self love बोल रहा हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम भी है. अगर मैं बहुत ज्यादा सेल्फ लव बोलूंगा तो मैं वो नहीं बन जाऊंगा कि मैं दूसरों की केयर ही करना बंद कर दूंगा. पॉसिबल ना, कि अगर मैं बोलूंगा यार सेल्फ लव, ललित प्रभु what you need to work on your self love. अब ललित प्रभु बोलेंगे यार सेल्फ लव आप बोल रहे हो, now should I stop caring about others? What does that mean, self love? No, that's not what self love means, you know. So we need to have self love with the humility to ensure that we are not becoming selfish. सेल्फ लव जब एक्सट्रीम में चला जाता है तो सेल्फिश हो जाता है. मेरे को करना ही है, तेरे को पता नहीं मेरी मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है, आई डोंट केयर, यू वांट टू डिवोर्स मी, गो डिवोर्स मी, आई डोंट केयर, आई नीड टू डू दिस बिकॉज दिस इज माय सेल्फ लव. दैट्स नॉट सेल्फ लव, यू नो, दैट इज जस्ट बीइंग सेल्फिश. सेल्फ लव मींस यू अंडरस्टैंड आपकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड सामने वाले की क्या नीड्स हैं, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सामने वाले की क्या डिजायर्स हैं. हाउ कैन आई हेल्प देम live a little slightly better life. अगर हम सारे husbands ये सोचना शुरू करते हैं, how can I make my wife a little bit more comfortable this week?
from today's Tuesday until Sunday, what can I do to make my wife's life a little better? And we ask them this question. And whatever they say, you contribute whatever you could. I'm telling you, 90% of the problems that we are having with our partners will be resolved. Same with wife. Wife should come and ask, what can I do? What is it what kind of need that you have that I can fulfill so that you can pursue self-love? Self-love ka matlab hota hai, I have some desires, I have some needs, and those needs need to be fulfilled so that I can be more efficient in my bhakti, in my other material life. Now, risk is कि दूसरों का we might start becoming more materialistic, है ना? So there are thing is, एक statement है, उसके दो part हैं. Statement ये है, I want to be happy. First part of the statement is I want to be happy. That alone, that statement in alone itself is selfishness. लेकिन अगर बोलते हैं I want to be happy so that I can serve people around me that I love better, that becomes self-love. Does it make sense? पहला एक statement है I want to be happy. In and itself, this sentence is a selfish sentence. But अगर हम इसको extend करें, I want to be happy so that I can serve the people around me who I love a little bit better than before, that is called self-love. Same sentence है, लेकिन अगर हम उसको अलग तरीके से break करते हैं, तो it gives us two things. One is self-love, one is selfishness. Ab 99% of unexplained medical issues happen because of lack of self-love. Right now, if you look at the medical journal, the latest research in psychotherapy talks about कि 99% of the total problems, physical problems, जैसे cancer, including cancer, gallbladder problems, stomach problems, mental health issues, sleep apnea, जितनी भी चीजें हैं, they are all coming from lack of self-love. And that's why it is one of the biggest study in from now to probably next 10-15 years is going to be the biggest area of study for all the psychologists on how we can actually work better in self-love. और मैंने उसको एग्जांपल दिया था, सेल्फ क्या है? हमारी कार है ना? सेल्फ कौन है? ड्राइवर है, और जो कार है वो है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी बॉडी. अगर हमारी बॉडी अच्छी नहीं है तो दिस बॉडी कैन नॉट सर्व द सोल, है ना? दिस बॉडी कैन नॉट सर्व द सोल. दिस बॉडी कैन नॉट टेक द ड्राइवर टू द प्लेस दैट ही वांट्स टू गो. अगर आपकी कार खराब है, दैट मीन्स वी नीड टू लुक आफ्टर आवर कंडीशनड सेल्फ एज वेल एज स्पिरिचुअल सेल्फ. हम लोग भक्ति में हैं. भक्ति में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो जाती है? हम लोग भक्ति में सिर्फ भक्ति 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 करते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस at a certain point of time we break down. हमारे सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाता है. We become this hard-hearted person. Now, if we are becoming hard-hearted person, it's not because of bhakti, it's because of lack of self-love. Bhakti is ultimate pure. There is no problem with bhakti. Bhakti with lack of self-love we become hard-hearted. कुछ लोग बोलते हैं, somebody, when I was doing this research, I was talking to one of the devotees, and the devotees कहता, वो devotee कहता मुझे, I exist to serve others. अब बताओ, is it I exist to serve others? Is it a wrong statement or a right statement? There is no wrong answer, by the way. What do you think is the right? Do you think it's right? I exist to serve others. Is it a right statement? It's some Partially extent. right, Prabhu. Partially it's right. Okay, partially right. So what is the Serve what? others at the same time serve ourselves. Yes, I exist to serve others by taking care of myself so that I can be more efficient in serving others. Okay? If we do that, then it becomes the best way of dealing with it. Most people try to do. Most people, जो आप बता रहे थे स्वर्ण माता जी शुरू में बोल रहे थे ना कि most people try to do what other people want them to do, है ना? Because we want to please everyone, है ना? It's okay to please everyone, but not at the cost of our own belief system, our own values, our own self-love, our own needs.
है ना. For example, I want Roxy to get up early in the morning. I want, like, I would like her to get up early in the morning. Yeah. If that is not her forte, है ना, and she's doing it every day for me, she might feel miserable thinking that, this is the one thing that I love, sleeping till late in the morning. And this man is emotionally blackmailing me to leave that. That's not self-love for me. That is taking advantage of my love, her love for me. That's not self-love. Self-love means I can inspire her to become a better person, but I cannot tell her to become a better person. I cannot force us to become a better person, because definition of a better person is different to me than to her. For in her dictionary, sleeping till late is not bad. You know what I mean? I'm not saying that sleeping till late is good anyway. I'm not saying that, because हमारे शास्त्र में लिखा है Brahma Muhurat is the best time to get up for our mental well-being. But because I believe in this, I cannot force her to believe in the same thing. That is not self-love. Okay? So we cannot forget about our needs. We need to fulfill our needs. And how do we fulfill our needs? We need to talk to our partners. We need to talk to people around us. Set some boundaries. We don't set any boundaries and we think, oh, why am I miserable? Because you always say yes to everyone. You will be miserable. If you say yes to everyone, you'll be miserable. You need to create boundaries. You say, you know what? I can extend myself up to here, but after that, please, you need to help me. I can't handle it anymore. You need to set boundaries between your husband, wives, bachon mein, sab jagah boundaries. You need to have a boundary, and make sure that people respect. If people don't respect that boundary, at least you respect your boundaries. And that is self-love. So we, according to our nature, we get this body is a gift from Krishna. But who is responsible for creating this body? Ourselves. हमारे खुद के कर्मा है जिसके कारण हमें body मिली है. So we need to work on this. है ना? So मैंने आपसे बात करी थी. There are 3 kind of people. है ना? पहला kind of person होता है it's all about me. है ना? अब it's all about me वाले जो लोग होते हैं, वो जो मैंने पहला बोला था एक्सट्रीम में होते हैं. वो कहते हैं कुछ मैं तो ऐसा ही हूँ, या तो it's my way or highway. ठीक है? They actually have no self-love. This is called extreme selfishness. है ना? And we need, that's extreme case. We should not even go there. दूसरा है दूसरे तरह के लोग होते हैं जो उनको लगता है कि वो भक्ति में, कहते हैं एवरीथिंग इज माया. My husband is Maya. My wife, whatever she likes, she wants to sing, she wants to dance, she wants to play poker, or whatever she wants to play. She wants to play badminton or whatever. She is in Maya. Why? Because she is doing all these nonsensical things, which has got nothing to do with bhakti. That is another extreme. I don't want to hang out with these people because they are not devotees. That is extreme. I don't want to have anything to do with these people. That is extreme. That's not self-love. It's not coming from self-love. हमारे शास्त्रों में it has not written in there like this. ठीक है? So everything is Maya. That is rubbish as well, because अगर मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, am I in Maya? If I like pizza, I'm not in Maya. If I like watching plays, I'm not in Maya. If I want to watch a movie, I'm not in Maya. I'm not suggesting we should go and keep watching movies and stuff. I'm not suggesting that. I'm just saying, just because if I have that need, I cannot be in extreme saying that, all of this thing is Maya, because our psychophysical needs are there. तो हमारे शास्त्रों में क्या ये नहीं बोला है? अब श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ. हमारे बोला है युक्त वैराग्य. युक्त वैराग्य का क्या मतलब होता है? If you like pizza, you don't need to leave pizza. All you have to do is make sure that pizza is offered to Lord Krishna and eat as much pizza as you want. You don't have to leave pizza. That's not bhakti. लेकिन नए भक्तों में यही होता है, नहीं ये सभी माया है. I cannot put deodorant on because it's Maya. No, if you want to be presentable, you need to put deodorant on. That's not Maya. That's being practical. So this is second extreme where, I can't.
You can't do bhakti effectively as you have made everything a burden. अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, हर चीज माया, हर चीज माया, थोड़े टाइम के बाद दे बिकम वेरी हार्ड हार्टेड. और क्यों हो जाते हैं पता है वो हार्ड अटैक? क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है. उनको लगता है यार मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने मंत्र कर रहा हूँ, इतने व्रत कर रहा हूँ, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी कितने खुश हैं. तो आपने देखा वो कई लोग जो होते हैं ना डिवोटी, एकदम मोरोस से नजर आते हैं, उनके चेहरे से लगता है कि उनकी जिंदगी निकाल ली हो किसी ने उनके, है ना. बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम ऑफ एवरीथिंग इज माया. एक्चुअली इट इज माया, बट it is my need. You don't need to get rid of those. If I want to go for a run, it's Maya. If I want to play badminton or table tennis or cricket, it's not Maya. It's my physical well-being के लिए जरूरी है ना. But because of cricket, if I'm playing cricket and leaving my sadhana, that is बेवकूफी. You want to play cricket, you play cricket, but अपनी भक्ति में कमी मत आने दो. But you do whatever you like to do, but never compromise on your sadhana. That is self-love. ठीक है. So ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया. पहला एक्सट्रीम क्या था कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, everything is me, my way or highway, it's all about me. दूसरा है everything is माया. और जो तीसरा है which is called healthy self-love, वो क्या है? Take care of your spiritual self. अब कई लोग बोलते हैं यार मैं तो सेल्फ लव में इतना घुसा हुआ हूं, मैं तो चैंटिंग नहीं करता. दैट इज स्टूपिडिटी. बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव इज you go very deep in your sadhana, because you get into deep in sadhana, you will have that realization that what are my needs. You will be able to understand your needs a little bit better as well, है ना. Okay, Mithil Prabhu, question, क्योंकि I'm going to go into the next topic, so I better take a question now. हाँ प्रभु जी, आपने ये तो सही से समझा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब सबको, हाँ, हमारी नीड्स है. लेकिन जब जब टीवी की बात आती है, देखो तो मेलबर्न के हिसाब से वेदर तो ऐसा ऐसा रहता है, तो टीवी पब्लिक ज्यादा देखती है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है. तो उसमें एक चीज मुझे पता है कि वी कैन अवॉइड वॉचिंग दी अदर थिंग्स, जस्ट वॉच समथिंग रिलेटेड टू गॉड. बट वो हर बार प्रैक्टिकल नहीं होता है ना प्रभु जी. अब जैसे देखना चाहिए, जो हमारे हमारा जो माइंड जिस तरह से बना है, वो पर्टिकुलर मेरा तो वैसा ही है कि मैं पूरा दिन नहीं देख सकता, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो जो एंजॉयमेंट होता है वो हम पूरा उसको एंजॉय नहीं कर पाते. वही मैं तो कह रहा था ना, जो आप बोल रहे हो ना फर्स्ट सेकंड वाला एवरीथिंग इज माया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. जैसे आप कह रहे हो ना कि आपको किसी किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को कॉमेडी शो देखने पसंद है. दीज आर ऑल नीड्स दैट वी हैव. ठीक है. मेक श्योर ये जो आपकी नीड है ना, ये आपको गर्त में नहीं डाल रही है. दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन इज, अगर आपकी साधना अच्छे से हो रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज दिस इज योर नीड. लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी तो कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है ना, उसमें लोगों को ब्लू स्क्रीन मना कर दी गई है जो दे आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल वेलबींग के लिए लोगों को बोला है यू गेट आउट ऑफ ऑल द ब्लू स्क्रीन. उनको वो वाले फोन दे दिए गए बटन वाले, है ना, और नो टीवी नो. तो एंड दे गेट बेटर वेरी सुन. कुछ नहीं चेंज करा, सिर्फ उनको हटा दिया. सो टीवी इज नॉट ए वेरी गुड थिंग फॉर अस, बट बिकॉज साइकोफिजिकली वी हैव कंडीशनड आवरसेल्फ कि नहीं यार मुझे टीवी देखना है, आई नीड सम एंटरटेनमेंट. यू शुड डू इट, बट मेक श्योर you have an allocated time for it, है ना. कोई भी चीज अति में लोगे ना, it will become hazardous to you. हाँ, अब भक्ति, अब आप बोल रहे थे ना हार्ड हार्टेड, जो मैं बोल रहा था ना, जो लोग यही जैसे आप बोल रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल टीवी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, और बच्चों को भी बोलो कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसी के हाथ में आईपैड नहीं दिखना चाहिए, ये वो, तो क्या होगा, आप इतने हार्ड हार्टेड हो जाओगे ना, यू विल फील वेरी, थोड़े टाइम बहुत अच्छा लगेगा, देन यू विल बिकम वेरी अनहैप्पी, very unhappy person, and an unhappy person will never make anyone happy. थोड़े टाइम बाद घमंड भी आने लग जाएगा कि देखो मेरे पास, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, we don't have TV for so many years. तो मैंने टीवी, तो I started feeling very proud कि मेरे घर पे टीवी नहीं है. We haven't, कितने हो गए, 12-15 साल हो गए, है ना, 12 साल हो गए घर पे टीवी नहीं है. But do I have entertainment? Yeah, I do have entertainment. हमारे पास लैपटॉप्स हैं ना. इफ यू वांट टू वॉच ए मूवी, नारायण वांट्स टू वॉच, मेरे पास एक वो भी लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है. कनेक्ट माई लैपटॉप टू द प्रोजेक्टर एंड ही कैन वॉच सम कार्टून्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वी वॉच मूवीज
है ना. बट आई नो कि मुझे उसको अति में नहीं करना. आई कैन नॉट डू इट इन एक्सट्रीम. आई नीड टू हैव ए बैलेंस. आई नीड टू, नारायण को बोल रखा है यू कैन वॉच 2 episodes, है ना, every 2 days. You can watch 2 episodes every 2 days. Same with us. We can watch one movie every week. No problem. You know? And if it's like a festive season hai, chuttiyan hai, you can watch 2 movies in a week. No problem. Don't deprive yourself now. But aim ये होना चाहिए कि God, please help me कि I can get rid of this TV from my life. धीरे धीरे करके. That should be our aim. But we should not force ourselves. We should go with it, but keep praying and keep reducing a little bit. आप ये भी देखो कि मैं कितना देख रहा हूँ. सपोज अगर आप 8 घंटे हफ्ते में देख रहे हो, तो आप ये डिसाइड करो कि नेक्स्ट वीक से मैं 7 घंटे देखूंगा. फॉर नेक्स्ट 6 months आई विल ओनली वॉच 7 hours. 1 घंटा कम करूंगा. एंड आई एम टेलिंग यू प्रभु, यू विल एंजॉय मोर. दैट 7 hour ऑफ टीवी यू विल एंजॉय मोर देन यू यूज्ड टू एंजॉय अनलिमिटेड आवर्स ऑफ टीवी. डेफिनेटली, है ना. जो चीज थोड़ी सी कम में मिलती है ना, वो हमें ज्यादा टेस्टी लगती है. तो ये भी, और इससे क्या होता है, हमारा कैरेक्टर इंप्रूव होगा, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ेंगी, वी कैन गो डीपर इनटू शास्त्रा, है ना. तो एक्सेसिव टीवी देखना ये हमारी नीड नहीं है एक्चुअली. ये क्या है, हमारा एस्केपिज्म है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्केपिज्म. वी वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस हमड्रम ऑफ लाइफ. इतना पावरफुल लाइफ चल रही है, भागा भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग. भक्ति में भी लोग कर रहे हैं भागम भाग भागम भाग. हम लोग वहां बैठे हैं, देखें क्या करूं, इधर भी भागम भाग उधर भी भागम भाग, क्या करूं, चलो टीवी देख लेते हैं, है ना. So we need to have a balance. Once you have a balance, it'll be easier. हेमलता माता जी, आपको क्वेश्चन था. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हाँ, प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु माता जी. वही आपने आंसर कर दिया. मैं वही कह रही थी कि एक बैलेंस होनी चाहिए. जैसे कि I'm very addicted to TV, but with life circumstances ना, पहले मैं मॉरिशस में थी, शाइनी छोटी थी, बहुत हेल्प मिलती थी. मैं जॉब से आती थी, बस मैं बैठ जाती थी सीरियल देखने. मेरा यही शौक था, मतलब है ना. अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और फिर शानू को नहीं पसंद सीरियल देखना, क्योंकि उसमें क्या वो होता है, सास बहू की लड़ाई झगड़े, बस वही दिखाते हैं, फेक वाला. और अगर एक एपिसोड देखा, 2-3 हफ्ते बाद देखा, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो बोलते थे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ. सही वो बोलते थे. अभी जाके मतलब विद टाइम आई लर्न दैट, बट पहले तो अच्छा लगता था ये सब चीजें देखना. फिर भक्ति विक्षा ज्वाइन करी. अब फिर विद लाइफ सर्कमस्टांसेस, जॉब, ये फैमिली देखना, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. और यहाँ पे मैंने वो भी नहीं लगाया जिसमें वो सीरियल वगैरह वो आते हैं, केबल वगैरह जो है. बट आई नीड दैट कि वी नीड टू बी कनेक्टेड एज वेल, क्योंकि मुझे न्यूज सुनना पड़ता है. आई लाइक टू बी लाइक, वो तो कोई देखना बात पड़ता नहीं. है. हाँ. और देखो, इफ रियलिटी यू हैव शोज बैलेंस मतलब, ना, इफ हाँ यू हैव जी, ए बैलेंस माता जी, इफ यू नो एग्जैक्टली, बच्चों हमें वो करना है जरूरी नहीं है. नीड्स है, हमें उसको फुलफिल करनी है, बट वी नीड टू फुलफिल इन स्मॉल डोजेस. वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग ओवरडोज भी नहीं करें, है ना. कोई भी ऐसा एस्केपिज्म जो है आजकल बहुत बड़ी चीज डील हो गई है एस्केपिज्म, क्योंकि हमारा पूरा नेटफ्लिक्स और जो पूरा ये जितने भी दूसरे कौन से अमेजोन प्राइम, ये सारे के सारे एस्केपिज्म पे ही चल रहे हैं सब लोग. क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग दे वांट टू एस्केप फ्रॉम इट एंड दे वांट टू गो इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड. इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड. एंड इन दैट मूवी एक आदमी जो बैठता है, ही इज कंसंट्रेटिंग हिमसेल्फ टू बी अ हीरो ऑफ दैट मूवी. और अगर कोई फीमेल देख रही हो तो वो हीरोइन अपने आप को समझती है. तो उनको वो जो 2-3 घंटे निकलते हैं उसमें, वो एक ड्रीम वर्ल्ड में निकल जाते हैं. दे थिंक इट इज गिविंग देम अ लिटिल बिट ऑफ escape, but it's actually not an escape. Like, if you look at scientific reports, it's actually not. It's very dangerous. Television shows, they're actually very dangerous in a sense. However, because we are conditioned on it, we have to remember कि किसी को ड्रग्स की आदत लग गई है, एकदम से नहीं छुड़ा सकते उसको. Slowly and gradually go to work towards it and understand it's okay. This is my folly. I want to watch movies. I want to watch TV series. This is my folly. I'm gonna work on it. Have a healthy relationship with it. Accept it. हम लोगों के साथ क्या है, डिवोटीज के साथ हम एक्सेप्ट ही नहीं करते. नहीं नहीं नहीं, मेरे को पसंद नहीं, वो तो मेरे को बच्चे बोलते हैं या ये बोलते हैं इसलिए देख लेते हैं. हमारे अंदर भी है देखने का, है ना. तो हम लोगों को क्या करना है, वी एक्सेप्ट हु वी आर, लाइक रियली हु वी आर, एंड देन बी ओके विद इट फॉर नाउ एंड ट्राई एंड गेट बेटर ऑन अ डेली बेसिस. अगर नहीं हो पा रहा है, प्रे टू द लॉर्ड, स्पीक टू डिवोटीज, गेट सम आइडियाज एंड मूव ऑन.
है ना माता जी? हाँ जी, अब मैं नहीं देखती हूँ प्रभु, मेरा मन ही नहीं करता है। आप मुझे बोलोगे कि बैठ के 3 घंटे की मूवी देखो, अब मुझसे होता ही नहीं है। माता जी यही तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप है ना, हम उस पे यही बात करने जा रहे थे कि अगर हमें सेल्फ लव करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। एक्सेप्ट कि मेरे, एंड लिटरली आई वांट यू टू राइट डाउन, ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर आपकी क्या क्या खामियां हैं, व्हाट आर द फॉल्ट्स यू हैव and what are the good things you have. You write it down, all of those, and make sure जो good things है ना, don't be humble in it, और नहीं यार खूब भर भर के लिखो अपनी तारीफें, क्योंकि ये हमारी एक बेस बनेगा। ठीक है रिचा माता जी, आपका क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई, ये कॉन्सेप्ट कि जैसे कि आपने बोला कि जो हमारी नीड्स होती है ना, वी शुड अंडरस्टैंड दैट एंड वी शुड ट्राई टू फुलफिल इट। मैंने एक बार भागवतम के लेक्चर में भी सुना था कि जगतारणी माता जी ने ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है, सम अदर प्रभु जी वाज मेंशनिंग कि शी हैज मेंशन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू गो टू कृष्णा, so before going to him, we have to fulfill all our needs which are coming in our way to Krishna. So if we will not fulfill it, तो हम कहीं ना कहीं हम जा ही नहीं सकते, because we will get stuck into our desires and needs, है ना? So but at that time I was assuming कि needs are, because need and wants are different. There's a difference between need and want. कि what I want, I may want some stupid things and at the very regular intervals also, very often. But need is something which is, if I'm not able to fulfill, then it is actually kind of disturbing me, myself, many times, or maybe I'm hard on myself that no, because I'm in bhakti, I can't do that, I can't. So need is something I think that really need to be fulfilled. But Prabhuji, as you are saying, I was thinking that watching TV at a very regular interval, it's like want, not a need. So please clear it for me, Prabhuji. yes actually माता जी, टीवी इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। देखो टीवी क्या है, टीवी मेडिकली भी इट्स नॉट कंसीडर्ड टू बी गुड थिंग टू डू एनीवे। हमारे मेडिकल साइंस में अभी जितने जो प्रूफ्स हैं, दे एक्चुअली आर मोर टुवर्ड्स not being in front of the blue screen, and if you really enjoy that humdrum of that storytelling, you listen to podcast stories and stuff, don't look at the tabloid, है ना? So that is not good for our health anyway. So ये जो example है टीवी वाला, it's actually can never be a need. TV is not a need. Our need is escapism, है ना? Our need is not TV. Our escapism need is getting fulfilled by TV because it is there and we have grown up with it. So हम लोग उसमें escapism देख रहे हैं। Escapism का मतलब होता है कि you get out of your normal routine and get into something which is either imaginary or superficial or whatever it is, so that it becomes a little bit lighter. So at the moment, I cannot say that TV is a need, TV is a want, but because we are addicted to it, it is a need. Not all of us can get out of TV at a drop of a hat. Not all of us, है ना? And it is okay. So, yes, Prabhuji, the needs का क्या मतलब होता है? मैं सुनो needs क्या होती है? needs का क्या मतलब होता है? If I don't fulfill that need, that can make me hard-hearted. That can make me emotionless. That can make me anything else जो हम पहले बात करी थी. So अगर टीवी हमारे साथ वैसा कर रहा है, that means it's a need for us, some of us. अगर नहीं कर रहा है, then it's just a want. Want के लिए कुछ नहीं है, want के लिए भी you need to just work on it, slowly उसको reduce करना है. हाँ, अब पूछो माता जी, सॉरी मेरा तो प्रभु जी एक कॉन्ट्रडिक्शन मेरा, हाँ मतलब मुझे ये, आई अंडरस्टैंड यू आर सेइंग इट बिकम अ नीड व्हेन वी आर एडिक्टेड, सो व्हेन वी आर रियली एडिक्टेड इट एक्चुअली डिस्टर्बिंग आवर बीइंग, है ना, रियल बीइंग, तो देन इट्स अ नीड. बट प्रभु जी जैसे कि प्रभुपाद ने कहा है, एवरी टाइम ही सेड दैट वी हैव टू डवटेल आवर नीड्स, आवर डिजायर्स, आवर एवरीथिंग. So then it means at the same time हमारे माइंड में एक अंडरलाइन वो रीजन होना चाहिए, एक एम हमेशा क्लियर होना चाहिए कि we have to go towards bhakti. So I am just watching this just to so that my bhakti should not disturb. So that should always be the real goal. और उसके बाद keeping that in mind हम उतनी ही टीवी देखें कि हमारा वो भी डिस्टर्ब ना हो, और दूसरा
एक जिसे हम ज्यादा से ज्यादा डफटेल कर सकें कि हम भगवान के कैरेक्टर्स देखें, हम कुछ ऐसा सुने देखें, महाभारत इस टाइप की सीरियल। और कैसे प्रभु जी, मतलब इज इट जस्टिफाइड कि हम अपनी, ये तो टीवी वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, एनी अदर एक्टिविटी दैट वी लाइक टू डू, लाइक वाचिंग क्रिकेट और एनीथिंग, फॉर इंस्टेंस like attending parties or going to, but I'm just giving random गेट टुगेदर, हाँ examples, हाँ बिल्कुल or बिल्कुल, going to the हाँ trips. So how often it is okay to do all these things? Because कभी, at the same time, Prabhuji, it is diverting it also, no, diverting us also from the spiritual path. If we are doing it very often, is it the or thing is, not? Mataji, the thing is, we have to understand that our goal is to do bhakti. लेकिन उस भक्ति के लिए we need two things. We need our atma, and also we need another thing. We need our conditioned self as well. अगर हम अपनी conditioned self को थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खिलाएंगे, तो हमारी conditioned self में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि हमें भक्ति के पास ले जाए ना। हमारा गोल हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माता जी, कि हम लोग अपने मन को इसीलिए, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं इसीलिए ये सपोज मैं ये फॉर एग्जांपल मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। पेंटिंग इज नॉट अ स्पिरिचुअल थिंग, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, है ना। आई एम जस्ट डूइंग नॉर्मल पेंटिंग, कोई लैंडस्केप हो गया ना। if I have that need, if I have that desire, if I have that need for me to fulfill this, I need to understand that I give that time. Now, how often should I give that time? It will depend on people to people. People like Srila Prabhupada can watch अपना चार्ली चैपलिन की पूरी movie and he will still will bring out Krishna in there. If this person who is a part and parcel of Krishna is such hilarious, how hilarious Krishna is, because everything comes from Krishna. Matta smriti ज्ञान अपोहनम च, भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे से आता है। तो जब ये चार्ली चैपलिन को देख के भी शिला प्रभुपाद can think of Krishna, we are not at Srila Prabhupada's stature, and we need to accept it right now. So जहां पे भी हैं हम, we need to have a very set goal. We need to dovetail. We can never crush our desires. We should never crush our desire. We should dovetail our desires. हमारे desires को dovetail करने का क्या मतलब हुआ? You go ahead and पिज्जा खाने का शौक है, डोंट गेट रिड ऑफ पिज्जा, भोगा लगा के फिर प्रसाद खाओ, ठीक है। If you want to really, you need to get into escapism, watch some amazing stuff, Ramayana, Mahabharata, Krishna TV series. उसके बाद भी if you want to watch some movies here and there, watch movies, no problem. If that is the requirement of your social gathering, for example, you, your partner, if that is a requirement, you do that. But always remember Krishna doing that. You're not doing that to get into Maya. You're doing that so that you can satisfy a little bit of the desires that you have. And you will always remember the goal that you have, and always remember to reduce everything which is not related to Krishna, slowly and gradually. Do not become hard-hearted, because the quickly you will do it, the more ego will come and more उतना ही घमंड आ जाएगा कि यार देखो मैंने क्या क्या कंट्रोल कर लिया, है ना। एंड सेकेंड चीज इज, एक चीज और है कि प्रैक्टिकल मेथड टुवर्ड सेल्फ लव में क्या है कि वी नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। अगर आपको अपनी सारी नीड्स फुलफिल करनी है, इफ यू वांट टू यूज द कंडीशन लाइफ, रिमेंबर टू फीड द सोल एज वेल, अदरवाइज यू विल फेल। आपकी साधना सेल्फ लव के लिए आपकी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर। हम लोग कितनी भी बड़ी घटिया गलती करते हैं, ही विल नेवर लीव अस, ही विल ऑलवेज लव अस द सेम टाइम। और अगर इसको कन्विक्शन बढ़ाना है तो वी शुड रीड द पास्ट टाइम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता ना, श्रीमद् भागवतम के पास्ट टाइम वो अपने डिवोटी के साथ कैसे डील करते हैं, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। साधना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, पास्ट टाइम्स पढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी चीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स रियली वेल। मेरे को एक्चुअली क्या पसंद है, क्या मैं ये चीज कर रहा हूँ क्योंकि कर रहा हूँ, या कर रही हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर मांगता है, या मेरे बच्चे बोल रहे हैं, या फिर ये अंदर से मेरे में ही कुछ है। ये पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई एम नॉट परफेक्ट। एंड थर्ड थिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू गेट आउट ऑफ इट स्लोली एंड ग्रेजुअली, है ना। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। सॉरी रुचिता माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे।
नहीं प्रभु जी, आई वाज जस्ट एडिंग टू दिस कि वी कैन नॉट फोर्स आवरसेल्व्स टू No. भक्ति में आप वो नेचुरली ही आएगा। लाइक व्हेन यू आर डूइंग योर साधना, वो ऑटोमेटिकली आपके डिजायर्स डफटेल हो जाते हैं। यू कांट फोर्स कि हमें भक्ति करनी तो हम 24 घंटे कृष्ण के बारे में ही सुने That's ताकि हम correct. भक्ति में आगे बढ़ सकें। वो Yes. अपने आप ही जनरेट होगा इंटरेस्ट टू नो मोर अबाउट हिम। दैट्स Beautiful. दैट्स व्हाट आई फील। I agree, and that's why that's the place where we need to be, जहां पर हम लोग understand करें, don't beat yourself up. It's okay to be imperfect, but it is not okay to stay imperfect. Does it make sense? We have to have that intention कि हाँ ठीक है यार, I'm imperfect, but I need to keep growing a little bit by little bit, little bit by little bit. ठीक है? हाँ And रिचा also, माता जी. also Prabhuji, Yes, Prabhuji, yes, you said. so एक और भी चीज होती है ना, जैसे अगर हम ब्रह्मचारी है तो पूरी सारी चीजें डिफरेंट, एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे हम गृहस्थ है तो हमारी फैमिली भी है, तो कुछ टाइम उनको हमें हमें उनको भी साथ में लेके चलना है। तो कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि भले हमें पसंद ना हो, लेकिन You have fulfillment के to do लिए it. we have to set example by ourselves, like we have to be an example for them. Yes. प्रभु मित्र प्रभु, मैं एवरी वीक, नियरली एवरी सेकेंड वीक मेरे इन लॉज के घर जाता हूँ। वहां पर इतनी दारू होती है, इतना मीट होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, चारों तरफ, है ना। आई गो देयर क्योंकि आई हैव टू, दैट्स माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम मैरिड टू समवन, उसकी फैमिली है, सो आई हैव टू, है ना। हाँ रिचा माता जी। प्रभु जी, अभी ये बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया। मेरे माइंड में पहले भी यही था जो मैं आपसे पूछ रही थी कि हम वी शुड नॉट बी वेरी हार्श ऑन आवरसेल्फ, कि मतलब अगर वो नीड है तो वी हैव टू फुलफिल बिकॉज दैट इज डिस्टर्बिंग अस। बट वो अगर नेचुरली चली गई है हमारे अंदर से, या इंटरेस्ट कम हो गया है, तो इट इज ओके ना, बिकॉज वी नॉट नीड टू अगेन एंड अगेन गो एंड इसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि है तो वो एक इल्यूजन ही। तो इफ इट हैज गॉन तो इट्स गुड ना प्रभु जी। तो हमें वेरी गुड। हमें क्योंकि पहले वो इंटरेस्ट थे पास में, बट इफ दे आर समटाइम दे कीप कमिंग टू अस, तो देन अगर हम वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवरसेल्फ ना, क्योंकि वो ऑलरेडी चले गए हैं समहाउ। बट अगर इफ दे आर डिस्टर्बिंग, मतलब मेरा ये डेफिनेशन था नीड का, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू क्लियर विद यू कि इज इट राइट डेफिनेशन कि प्रभु जी अगर वो हमें कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी एग्जिस्टेंस हो किसी भी वे में, then only we should go to fulfill them। और That's correct. That is एलियोर correct. थोड़ी ना हो जाना है प्रभु जी, एलियोर नहीं हो हाँ जाना है ना। क्योंकि हाँ आपको ये भी नहीं होना, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग भूल जाते हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग, अगर हम लोग 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, वी विल गो विद दैट स्टेप्स। हमारा पार्टनर अगर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, यू डोंट नीड टू स्लो डाउन योर साधना, यू कैन वेरी डीप इनटू साधना, बट स्टिल होल्ड देयर हैंड एंड बी विद देम इन द स्टफ दैट दे एंजॉय। वी पर प्रभु नीड जी एट द सेम टाइम इस चीज में बहुत वो हो जाता है सटल, हमारे माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हो जाती है कि अगर हम उस चीज को वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। जो आप कह रहे हो वो यस बिल्कुल 100% नहीं 200% ट्रू है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि हम भी फिर उसमें उनको सपोर्ट करते हो, जब हम खुद हमारा इंटेंशन हम भूल जाते हैं कि हमें कृष्णा को प्लीज करना है इन दी एंड, और वी आर डूइंग दिस फॉर आवर पार्टनर्स फॉर टू सपोर्ट देयर भक्ति, और हम खुद ही एंजॉय करने, तो दैट इज आल्सो ओके। वी शुड फॉरगिव आवरसेल्फ, क्योंकि हम कई Yes, बार भूल ही that is जाते also हैं। okay because we are work in progress, and if we remember that, nothing will, कोई हमको शेक नहीं कर पाएगा। Work in progress है, but we need to keep progressing towards our goal, है ना? प्रभु जी फिर Don't बस एक start. चीज मुझे, हाँ एक चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि फिर बोलो। वो जो प्रभुपाद ने ये बोला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि मतलब मटेरियल डिजायर विल कम बट डिवोटी नेचर और डिवोटी इज नॉट टू रिएक्ट ऑन ऑल द डिजायर्स, मतलब Yes, वी शुड नॉट वो वी शिला शुड नॉट प्रभुपाद एक्ट, शिला दैट इज प्रभुपाद द कह रहे डिफरेंस हैं, बिटवीन, this हाँ is दैट इज द this is the डिफरेंस। highest thing where we have to reach, माता जी। So जैसे हम लोगों को बोला गया है कि प्रजल्पा नहीं करना है, प्रजल्पा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रजल्पा करते हैं, है ना। इसका मतलब थोड़ा कि हम लोगों को, अब हम लोगों को भाग जाना चाहिए। तो हमारा हाईएस्ट स्टेज क्या है कि वी नीड टू स्टॉप प्रजल्पा कंप्लीटली। अगर हम लोग प्रजल्पा करने में, गॉसिप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सभी भी गॉसिप हो रहा है, ऑल वी हैव टू डू इज एक्नॉलेज इट एंड वर्क टूवर्ड्स इट। एंड हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि यार
I really need to get rid of this gossip from my vocabulary. मतलब मेरे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए gossip, ठीक है? लेकिन that's the highest stage. जब शिला प्रभुपाद बात कर रहे हैं, he's talking about the highest stage which we have to aspire for. That should be our goal. That cannot be our present right now. क्योंकि अगर वो हमारा present है, that means we are already at that stage जहां पर शिला प्रभुपाद बात कर रहे हैं, है ना? हम लोगों को वो कह रहे हैं वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. उसके अलावा ये छोटे जो सटल हमारे अपराध होते हैं, वी नीड टू स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनको कहते हैं अनर्था जो होते हैं, इनको धीरे धीरे हम लोगों को, तभी तो कहते हैं नष्ट प्रायशु अभद्रेशु. प्रायशु का मतलब होता है धीरे धीरे, अल्टीमेटली. अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या. जो नित्य भागवत पढ़ता है उसके सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं. शिला प्रभुपाद ये नहीं कहते कि तुम्हारे अभद्र अभी नष्ट करो फिर तुम भागवतम पढ़ना शुरू करो. भक्ति का कोई प्री रेक्विजिट नहीं है ना भक्ति. और जब शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं तो दैट इज एन अल्टीमेट स्टेज वेयर वी नीड टू बी. हम लोग को एस्पायर करना चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए. दैट इज नॉट द स्टेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना? दैट इज द डिफरेंस. और अगर हम लोग मानेंगे ना इस बात को, वी विल बी कंपैशनेट. You're right, yeah. हाँ, you're right, because we all are work in progress. So अभी तो जो desires आएंगी, if we are not able to control, we will react, है ना? Yeah. We will Yes. fulfill it. Yes. So we प्रभु will. जी, last thing, हाँ. जो आप शायद लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मतलब सेल्फ लव का ये भी एक पार्ट है कि we should be lenient with ourselves, कि we should not very harsh with ourselves, कि हाँ. we should forgive ourselves, है ना, जब आप कह रहे थे. Yes. तो वो किस Forgiveness. सेंस में आप कह रहे थे? तो forgive तो प्रभु जी हम लोग तो एक्चुअली अपने साथ lenient ही होते हैं. जैसे सपोज कुछ अपराध हो गया या कुछ भी आपने कुछ हमने सपोज कोई ऑफेंस भी कर दिया डिवोटीज के लिए भी, तो हम कौन सा खाना पीना छोड़ देते हैं? हम थोड़ा गिल्ट फील करते हैं, हमें हो सकता है 1-2 दिन नींद भी ना आए, है ना? फिर उसके बाद तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं. तो हाउ वी आर हार्श ऑन आवरसेल्फ, मुझे तो नहीं समझ में आया. हम मैं तो बताता फॉरगिव ही हूँ. कर देते हैं अपने आप को. I'll तो tell you. वो So प्लीज मुझे समझाइए प्रभु जी. हाँ, तो वो जो forgiveness है ना माता जी, that forgiveness when we were talking about is forgiveness. हम लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारी जो साइकोफिजिकल प्रॉब्लम्स है, हमारी जो एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है, ये सारी की सारी चीजें जो कहाँ से डेवलप होती है, वहां से डेवलप होती हैं जहां पर वी हैवंट फॉरगिवन समथिंग ऑन इन आवरसेल्व्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, अगर उसने बचपन में कोई ऐसा काम करा है जो जो उसने कभी सोच भी नहीं सकता, फिर बाद में वो ठीक हो गया है, वो उस तरह का काम कहीं पर भी देखेगा, ही विल बिकम एंग्री, साइकोटिक, like very violent, only because he has not completely forgiven himself for the stuff that he has done. Forgiving yourself का मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ आपने जो करा है. Forgiving yourself का it's okay, I'm not perfect, I made that mistake, I'm gonna try not to make this mistake again, है ना? तो आप जो कह रहे हो ना, we forgive and we move on, it is a good thing, but there are so many subtle things which we have not forgiven ourselves for. For example, अगर for example, initially, for example, when I have not forgiven, when I was talking to you guys last week, तो मेरे दिमाग में बस एक ही इंसिडेंट आ रहा था कि I have not forgiven myself for pushing Roxy so much at the start of my bhakti journey. मैंने उसको बहुत ज्यादा पुश कर दिया उसको. I have cornered her so much, and because I was naive, I was very new, I'm still new, but at that time I had very limited understanding and I was on a very fast jet plane, है ना? मुझे लग रहा था कि मुझे आज के आज प्योर डिवोटी बनना है ना? तो in that adrenaline I pushed her so much, and last week मेरे को दिमाग में आ रहा था यार, I think I have not forgiven myself for that. So this whole week I've been trying to forgive myself. It's okay, I was not doing it intentionally. It was not part of the plan. And I'm stuffed it up. It's okay. There is nothing that cannot be mended. And I have to tell myself every single day for the whole week. Now I'm okay with it. I don't think I've forgiven myself for it, but I think I'm okay with it. I've accepted that I've stuffed up. I have taken measures in the last whole 2-3 years. I've taken a lot of measures to make sure कि वो चीज impact नहीं करे. And I'm going on that path, then it's easy for me to now I should forgive myself for whatever has happened, so that I don't get angry when some of my desires are not fulfilled. I get angry because I haven't forgiven myself.
So we are talking on that context, Richa Mataji. It is some very deep wounds जो हम लोगों ने Okay, Prabhuji, okay. किए हैं. We Something haven't very, yet- something very Yeah. big in our life. Something Very, big in. something very big. Okay, okay. Okay, Prabhuji. Because अगर वो डेफिनेशन क्लियर ना होना प्रभु जी, तो हम लोग कुछ का कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं, और मैं वही Exactly सोच रही right. थी, हम लोग पहले ही बहुत लीनियंट रहते हैं, तो और अगर हम लूज हो जाएंगे ना भक्ति में, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे. नहीं, तो we should not be हाँ, loose. बट We ठीक है, should be very strict with गोल bhakti. गोल Bhakti शुड में बी साधना ऑलवेज में क्लियर. हाँ, हाँ मिस्टेक्स तो होंगी, डिजायर्स भी हम पूरी हाँ करेंगे, बट बस. हमेशा गोल यही होना चाहिए कि वी हैव टू कम बैक, वी हैव टू कम बैक. That's correct. हमें आना And we have to be able to talk to ourselves. It's okay. Like, you know, I should be able to stand in front of the mirror and say, Brijesh, it's okay. You know, stuffed up, it's okay. Just make sure that you put some things in place that you can get better at it, you know, slowly and gradually. You know, make sure that you can have that discussion with yourself. और फिर क्या होगा? It will have so much of self-love. We will feel more energized, more empowered, and that we can give it to our kids as well. है ना? क्योंकि जो किड्स है ना, कंपेयर नहीं करने का अपने किड्स को किसी के भी साथ, कभी भी नहीं. वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. यार वो बच्चों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, वो स्कूल में जाके वही कंपैरिजन देखेगा. अगर उसको कंपैरिजन फुलफिल नहीं होगा, he will stop loving himself because he will think, oh, you know what, my mother is right, my father is right, I'm dumb, I'm an idiot, I'm stupid. And that if he is growing up with that intention that I'm stupid, that is against self-love. This kid will never have self-love. Not, I shouldn't say never. It will be hard for this kid to have self-love अगर हम उसको बचपन से कंपेयर कर रहे हैं, है ना? अगर आपका बच्चा completely happy and satisfied with himself, है ना, यही करना है हम लोग को अपने बच्चे के साथ. आपका बच्चे को विश्वास दिलाना है, he is amazing kid and we love him so much or love her so much. अगर हम इस तरीके से बच्चों से बात करेंगे, then they will grow up with lot of self love. तो कोई बाजू वाला बंदा आके उनको बोलेगा, ए तू ऐसा बेवकूफ है, कहता है ठीक है यार, तू तो तेरे को पता नहीं है, क्योंकि I know that I'm loved by my parents so much. You know, I'm a good kid and my parents love me for who I am. I know I've got some problems, but they love me. So what you're telling me, it has no meaning on me. Meaning, there's no meaning for me because I have a lot of self-love. And that's why we have to make sure that we have self-love, so our kids, the people around us, they can actually look at us and learn from us. Kids learn from parents. If we don't have self-love, we can never teach self-love for the kids. Okay? All right, that's it. We stop here. Anybody has any questions? Anything else? All right, अगर आपके कोई questions हो तो उसमें group में डाल देना. We will do some discussions in the group as well. ठीक है? Oh my God, I think we are late. Sorry guys, I'm so sorry. 20 minutes late. Congratulations, Pooja Mataji. Can Hare you see the Krishna, baby? everyone. Hare Can we see the Krishna. baby, please? I can see you smiling all the way. Hare Krishna. Hare Krishna. What am I missing? Am I missing something? No, okay. I think you're Congrats. smiling with some baby or someone. I don't know. I just wanted to ask. No, मेरी sister का baby है. Oh, so sorry. All right. I'm in All right, India currently, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for joining. I really appreciate. Thank you very much for giving me opportunity to talk about this, and it has cleared some things for me as well, and I'm very grateful. And hopefully आप लोगों को भी ठीक लगा होगा. And if you guys have any questions, अपनी classes maybe you can ask questions on this because it's a very big topic. It's hard to cover in 1 hour. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.